So hello children, I welcome you all to the video lecture series by winning age। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एल्जेब्रिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में। एल्जेब्रिक कॉन्सेप्ट्स बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आज की इस वीडियो में इट विल बी अ वेरी क्विक वीडियो जिसमें मैं आपको सारे बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझाने वाला हूँ। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं वेरिएबल्स की। व्हाट आर वेरिएबल्स चिल्ड्रन? जो भी एक्स वाई जेड ए बी सी जितने भी हमें टर्म्स दिखाई देते हैं एल्जेब्रा में, बेसिकली हम उन्हें वेरिएबल्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आई राइट डाउन 2x²। ठीक है, हमने जैसे 2x² लिख लिया। इन दिस x² चिल्ड्रन विच इज रिटन हियर, दिस डिनोट्स व्हाट? दिस डिनोट्स अ वेरिएबल। इसको बोलते हैं हम वेरिएबल। सो एनी पर्टिकुलर नंबर विच इज नॉट हैविंग अ स्पेसिफिक वैल्यू, जिसकी एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती, उसे हम वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, वेयर एज द नंबर विच इज अटैच्ड टू द वेरिएबल, जैसे यहाँ पे 2x² में ये जो 2 है, ठीक है, दिस इज नोन एज द कोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट वो होता है जिस पर्टिकुलर टर्म की हम बात, टर्म में से जिस पर्टिकुलर नंबर की या वेरिएबल की बात कर रहे हैं उसे छोड़ के जितनी भी चीजें उसमें प्रेजेंट होती है उसे कोफिशिएंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव 3x y z, इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि y का कोफिशिएंट क्या है, तो y का कोफिशिएंट विल बी 3x एंड z। y को छोड़ के जो भी उसमें बचा दैट इज द कोफिशिएंट। अगर आपसे कभी न्यूमेरल कोफिशिएंट पूछा जाए, न्यूमेरल कोफिशिएंट का मतलब होता है कोफिशिएंट विच इज हैविंग अ नंबर इन इट। ठीक है, जैसे कि इफ आई राइट डाउन 3x², तो 3x² में न्यूमेरल कोफिशिएंट क्या है? 3 इज द न्यूमेरल कोफिशिएंट। ठीक है, आई होप यू आर क्लियर विद वेरिएबल कोफिशिएंट। अब वेरिएबल का बेसिक मतलब ऐसे होता है कि जो चीज जिसकी फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। ठीक है, कोई भी ऐसा टर्म जिसके हम फिक्स्ड वैल्यू नहीं लेके आ सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। जैसे कि x हम मैथ्स में यूज करते हैं, x का कुछ भी आंसर आ सकता है। इट कैन कम एज A B C D, आई मीन सॉरी 1 2 3 4, कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होती है, कुछ भी वैल्यू आ सकती है। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल देयर। ना टर्म्स का मतलब क्या होता है? लेट्स से मैंने यहाँ पे लिखा है 2x² प्लस 3y प्लस 9। ठीक है, अब ये एक एक्सप्रेशन है चिल्ड्रन। इस एक्सप्रेशन के अंदर मेरे पास तीन टर्म्स है, पहला 2x², दूसरा 3y और तीसरा 9। सो ये तीन टर्म वाले एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे? कि हम बोलेंगे इसे पॉलिनोमियल बोलेंगे। पॉलिनोमियल मीन्स बहुत सारे इसमें टर्म्स हैं। ठीक है, और ये टर्म्स होते हैं इंडिविजुअल, जिसको हम प्लस माइनस में काउंट कर सकते हैं। अब हम ये नहीं बोलेंगे कि भाई 2 एक टर्म है, x² एक टर्म है, ऐसा नहीं है। 2x² इज अ सिंगुलर टर्म और 3y एक सिंगुलर टर्म है, 9 एक टर्म है। ठीक है, सो टर्म्स आप, आई होप आपको समझ में आ गया कि आगे हम जब लाइव में टर्म्स की बात करेंगे, टर्म्स का मतलब क्या होगा? जो इंडिविजुअल प्लस माइनस हो गए हैं। ठीक है, now children, next thing what we have is called like term and unlike terms। अब like terms और unlike terms क्या होते हैं? like terms का मतलब होता है जिनमें सेम वेरिएबल होता है। क्या याद रखना है आपको? the ones which have same variable। for example if you have 3x² कॉमा और प्लस माइनस कैसे भी इसे काउंट कर सकते हैं हम। ठीक है, प्लस लेट्स से 5x² प्लस 6x², इन सभी में सेम वेरिएबल है, दैट इज x²। ठीक है, सो जो लाइक टर्म्स होते हैं खैर वो ऐड भी हो सकते हैं, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। सो 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8, 8 एंड 6 इज 14, 14x², ये हमारा आंसर हो गया इसका। ठीक है, एंड व्हाट आर अनलाइक टर्म्स चिल्ड्रन? अनलाइक टर्म्स जिनमें डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, जैसे कि 3xy प्लस 16z² प्लस 21z, ये क्या है? अनलाइक टर्म्स है। अनलाइक टर्म्स का मतलब क्या होता है? जिनमें डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, विच डू नॉट कैरी द सेम वेरिएबल, जैसे x y z² और z। आपको क्या याद रखना है? अगर वेरिएबल की पावर भी चेंज होती है तब भी वो डिफरेंट वेरिएबल कंसिडर किया जाता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में आप इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि z² और z दोनों ही डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आया। व्हाट आर कोफिशिएंट? कोफिशिएंट इज व्हाटएवर इज अटैच्ड टू योर पर्टिकुलर वेरिएबल और नंबर यू आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, टर्म्स क्या है? प्लस माइनस में कितनी चीज हमारी आइडेंटिटीज हैं। ठीक है, लाइक टर्म्स आर दोज व्हिच हैव सेम वेरिएबल्स। ठीक है, अनलाइक टर्म्स वो होते हैं जिनमें डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं। Now, during the course of this video, children, we'll be revising up the concept of addition, subtraction, multiplication, and division. ठीक है, so सबसे पहले बात कर लेते हैं addition की। Now, with addition, what is it, children? I already told you कि हम like terms को add up कर सकते हैं। ठीक है, so I'm going to put up a question on your screen। Okay, but before that, I'm just gonna see who all are present in the live. Okay, Atikarsh is present, Kavyan is present, Tejashri is there, Ankit Kumar is there, Anil Upadhyay. Okay, all right, Dharmendra Dalal is there. Okay, a very good afternoon to all of you. So I hope, tell me in the comment section, children. I hope you have understood the basic difference between the coefficient, like term, unlike term, and all those things, right?
Okay, Tejashri says I'm not audible. Okay, let me check. Others, can you hear me? All right. Let me check the audio. Okay, I hope I'm audible then. All right, thank you. All right. So moving forward, we were talking about addition. So as per addition, I've told you कि addition में we'll be talking about only the like terms. ठीक है? जैसे कि let's say we have 2x square children plus 18xy plus 10x square plus 2xy. Okay. So in this, what do we see? We see children. What are the like terms? Like terms हमारे पास क्या है? जैसे 2x square and 10x square. These both are like terms, right? Then as you can see 18xy and 2xy, they both are again like terms. So when we add them 2x square plus 10x square, it will give us children 12x square. And whereas when we add 18xy and 2xy, it will be going to give us 20xy. ठीक है. So ये हमारा simpler addition हो गया. I hope you have understood this. Addition in algebra is very simple. You just have to identify which are the like terms और आपने उन like terms को simply add कर देना है. ठीक है. Unlike terms नहीं करने हैं. Now let's say if a question comes like this. Let's say it asks you 3xy plus 12x square plus 9z. ठीक है. Then they put a comma. Okay. उसके बाद लिखा होता है let's say 21ab plus 6x square plus 12c. Okay, now in such a way how will you add? Simply children, you are going to add the like terms. जो remaining terms होंगे वो आप as it is अपने आंसर में छोड़ दोगे. ठीक है. जैसे कि in this case we can see 12x square and 6x square both are like terms, right? So 12 में 6 add कर दोगे, this is going to give you 18x square. Is there any other like term, and can you tell me? No, there is no other like term. So 3xy cannot be added to 12ab or 12c or 9z or any one of it. Yes, Utkarsh, this is for RMS also. You can see because RMS maybe you might be seeing some questions of algebra, so it is relevant.
Then you have 3xy as it is, हम छोड़ देंगे. 9z will be added as it is, plus 21ab as it is, and 12c as it is. So in questions like these where you do not find like terms more, then you leave it there. ठीक है, वही हमारा final answer होता है. इसमें अब कुछ नहीं कर सकते हैं. That is final then and there. Okay. Moving on to children subtraction. Now subtraction may mostly the questions which come from algebra are very very simple. Just you have to pay attention to little things. What are those things? Firstly, look on to the example which I'm putting down on your screen. ये simple से example आपको अपने दिमाग में रखना है. ठीक है? What is the example? It is a question actually. The question is, okay, just a second. Okay, so the question is subtract 4 from 6. Now you'll say ये क्या सर इतना simple सा question पूछ रहे हो, सबको पता है इसका आंसर 2 होता है. What I want you to remember from this question is कि अगर हम 4 को 6 में से subtract करते हैं, how do we write it down? ठीक है, we write it as 6 minus 4, right? अब ये जो -4 हमने लिखा है, क्या क्वेश्चन में -4 लिखा था? क्वेश्चन में -4 नहीं लिखा था, ये माइनस का साइन हमने खुद से लगाया. ठीक है, दिस इज व्हाट आई वांट यू टू रिमेंबर व्हाइल डूइंग ऑल द सब्ट्रैक्शन क्वेश्चंस इन अलजेब्रा. ठीक है, so 6 minus 4 is 2, and that we know is our final answer. ठीक है, अभी I'm going to give you a question here based on subtraction in algebra. So the question is like this, and I'll give you 10 seconds, 10 to 15 seconds. Let's see how many of you can solve it, and tell me the answer in the comment section then. Subtract 4x square plus 9xz plus 7y from 12x square plus 18xz plus 14y. I'm waiting for you in the comment section. Put it down, children, and then we'll see the answer. Come on, come on. And also put down in the comment section, are you understanding what I'm trying to teach you here? Your feedback is also important. Okay. Antriksh has given answer. Antriksh says it is 8x square plus 9xz minus 7y. Minus 7y. Okay. I'm not sure of your answer. I think you need to recheck, Antriksh. Okay, others, I want to see the answer from others as well. Okay, so okay, couple of you have given answer here. Now let's see. Same way, children, जैसे हमने 4 को 6 से subtract करा, same thing we are going to do here. जो from के आगे लिखा है उसको हम top पे रखने वाले हैं. ठीक है, so 12x square plus 18xz or zx, it means the same thing, plus 14y. From this number, children, we have to subtract. Okay, so this 6 minus 4 could also be written as 6 and minus 4 like this, जैसे हम elementary classes में पढ़ते हैं, right? So same way I'm going to write down this algebraic expression also. ठीक है, हमें क्या subtract करना है? We have to subtract 4x plus 9xz plus 7y. So I'm going to write it down below. 4x square just below 12x square because they are like terms. ठीक है, 9xz किसके नीचे आएगा? 18xz के नीचे आएगा. So we write down 9xz and 7y below 14y. Okay. Now children, what you need to do is जब हम subtract करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, negative sign will add by ourselves. जैसे क्वेश्चन में subtract 4 from 6 में माइनस का साइन नहीं दिया था, है ना, हमने खुद से लगाया while subtracting. So same thing goes for algebra also. By yourself you are going to add a negative sign. So here it will become, children, minus 4x square. Here it will become minus 9xz, and here it will become minus 7y. क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? subtract कर रहे हैं. subtract कर रहे हैं तो साइंस चेंज करने पड़ेंगे, right? Now, in the good thing in algebra, or another good thing in algebra is that you can start from left hand side also and right hand side also. जबकि हम अगर numerals को plus minus करते हैं, we have to follow the order कि हम right side से solve करना start करेंगे. इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, हम left से भी कर सकते हैं. देखो, 12 minus 4 is 8x square. ठीक है, and here 18 minus 9 is 9xz. ठीक है, and 14 minus 7 is 7. Okay, and the variables attached to them. ठीक है, so I hope आपको ये चीज समझ में आया है कि how do we subtract in algebra. ठीक है, so we'll move on to next part, which is our multiplication. So let's see what is the multiplication, but before that I'm going to give you a small question and I would want you to answer it in the comment section, children.
Okay, the question is subtract 4x square plus 21y from 9z plus 16x square plus 23y. Okay, I'll give you a quick 10 seconds and I want you to solve this out, children, and put it down in the comment section. Let's see how many of you get this right. Okay, Ankit has given answer -7. -7, how come -7? Okay, that's supposed for the previous one. Okay, Antriksh has given answer. It says 9z plus 12x squared plus 2y. So let's check your answer, Antriksh. So we'll write down 9z plus 16x squared plus 23y. From this, children, we need to subtract what? We need to subtract 4x squared. So 4x squared I'm going to write down just below 16x squared. Okay? Plus 21y. 21y will be written just below 23y. But we also have another term, this 9z. 9z से कुछ भी subtract नहीं हो रहा है. So we'll let it be as it is. We're not going to change anything. Then children, we'll put negative signs. ठीक है? This will become negative. This will become negative. So 23 में से 21 चला जाएगा. You're left with 2y, right? And 16 minus 4 is 12. So 12x square plus 2y. And this children 9z. 9z में से कुछ भी subtract नहीं हुआ. So this will remain as it is. So 9z plus 12x square plus 2y. This will come out to be our final answer. I hope you are clear with this. Now moving on, we have the concept of multiplication. So multiplication in algebra is very easy, and this is going to help you if you pay attention. And I sincerely want you to reply to me in the comment section, children, so that I know how many of you are paying attention to this. So multiplication, let's see. Let's say I have a term like 2x. I have to multiply with another 2x. So 2 2s are the 4, हम सबको पता है, right? But what is 2x into 2x? 2 into 2 is 4, okay? And x into x is going to give us x square. ठीक है? And similarly, let's say I have 3xy into 2x square. So 3 2s are 6. सबसे पहले आप numerical coefficients को multiply करते हैं, ठीक है? Then you multiply the variables. And what is the best thing with variables? इनको multiply करना बहुत easy होता है. आपको क्या करना है? सिर्फ इनकी powers को add कर देना है. For example, x square into x, x to the power 3, y अकेला है तो y as it is. Okay? Let's see some more. Let's say you have 12xyz multiply with 2x square y. ठीक है? Multiply by 2z square a. Okay, well, so different variables we have taken. Now, first of all, this is 2 2s are 4, ठीक है? And 12 4s are 48. So we have 48 as the numerical coefficient now. Now x into x square. X into x square is x cube. ठीक है? Y into y will give you children y का square. Z into z square is z का cube. ठीक है? This comes out to be answer. Now this is multiplication when your digits, when your terms are singular. ठीक है? हम single term को single term के साथ multiply कर रहे हैं. Monomial with a monomial. ठीक है? Now we are going to see what happens when you multiply monomial with a binomial. ठीक है? So let me erase this first. I hope you are clear with this. Alright, children. Let's say we have a question like, it is very simple. So it says 2 times 3x plus 4. Okay. So what you have to remember here is, children, that, okay, Abhigan, welcome to the class. Good afternoon. Okay, what you have to remember is that you have to multiply the term which is outside the bracket to all the terms inside the bracket. भले ही अंदर 2 terms हो, 3 terms हो, polynomial हो, binomial हो, whatever it is. ठीक है? So 2 into 3x is going to give us 6x and 2 into 4 is going to give us 8. And जो sign है बीच में वो as it is रहेगा. That will not change. ठीक है? Let's see another question, and this time you tell me the answer in the chat box. I have 2a bracket 4a square plus 5a cube
I want you to tell me the answer in the chat box, children. Come on. I'm waiting for you. Okay. So Antariksh has given answer 8a square plus 10a to the power 4. Okay, that's absolutely right. So first of all, we're going to multiply 2a with 4a square. So it will give us 8a to the power 3. Then 2a into 5a cube, which is going to give us 10a to the power 4. Okay, very good, Antariksh. You've given all answers right. Very nice. Okay, moving forward, let's say you have a binomial multiplied with another binomial. Okay, let's say we have the same similar term like 4a plus 5b, which is being multiplied with 6a plus 2b. Okay, okay, Tejashri has also given answer. Tejashri, that's right, very good. Okay, now children, same arrow method we are going to use to multiply these also, but what you have to remember is आपके पास जब दो ब्रैकेट ऐसे मल्टीप्लाई करने के लिए होते हैं, आप फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म पिक करोगे. You'll pick the first term of the first bracket and multiply it with all the terms of the second bracket. ठीक है? What do I mean by that? You'll multiply 4a with 6a and you'll multiply 4a with 2b. ठीक है? So 4 6 are 24, a into a square. Okay, then 4a into 2b, 4 to the 8, a into b is ab. I hope this is clear to everyone, right? Now we have done half of the question. Remaining part is 5b. We have to also multiply it by 5b. So 5b into 6a and 5b into 2b. So 5b into 6a, children, tell me, it will obviously be 30ab, and 5b into 2b will be 10b square. Now this is not your final answer, okay? You have to make one more step here. That is, if you see the middle two terms are like terms, both are having same variable ab, right? Which means we can add them. So 24a square plus 10b square I'm writing down first, okay? And then 30 plus 8 is 38ab. And this comes out to be our answer. So I hope you have understood how do you multiply with binomial. ठीक है? So ऐसे में अगर तीन टर्म्स होंगे तब भी आपका कॉन्सेप्ट सेम रहेगा बेटा, कि आप पहले फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म के सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप सेकंड टर्म पिक करोगे फर्स्ट ब्रैकेट का, उससे बाकी सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दोगे. पिक वन टर्म, मल्टीप्लाई विद द सेकंड ब्रैकेट, फिर पिक सेकंड टर्म, मल्टीप्लाई विद द सेकंड ब्रैकेट. बस दैट्स ऑल व्हाट यू नीड टू डू. Okay, so I hope you have understood here multiplication. Now children will proceed to division. So division is of two types here. Division is of a single term and you have a double term, or you can call it a binomial. Okay, single term division is very easy. Let's say I ask you to divide 5x square y divide by 5. Okay, so it is very obvious that if you divide 5x square y by 5, 5 ones of 5 will get cancelled, x square y will be left. So that comes out to be a simple answer. I hope all of you understanding. Those who are present in the live, you can put a thumbs up in the comment section. Okay. Next one, children, let's see. If you have 6x square y divided by 12y, okay. In such a case, what you will do, 6 1s are 6, 6 2s are 12, x square to cancel ho nahi raha hai, x square as it is, y and y are getting cancelled, और नीचे क्या है, 6 2s are 12, so x square upon 2 will be your answer in such a case. It's not necessary in algebra कि आपका जो divisor है वो completely finish हो जाना चाहिए, ठीक है? It can be there, so x square by 2 is our final answer here anyway. Now let's say another question like we have 4a plus 12b divided by 2. So in such a case, what are you going to do? You're going to divide each of the terms by 2. So 4a also divided by 2, children, and 12b also divided by 2. So what will this give us? 2a, and 12b divided by 2 is 6b.
So 2a plus 6b comes out to be our answer. So आपको क्या याद रखना है कि even if you have a binomial, दो टर्म्स है आपके पास और वो एक सिंगल टर्म से डिवाइड हो रहा है, which means आप हर एक टर्म को सिंगल टर्म से डिवाइड करने वाले हो. That's all, सिंपल जैसे डिवाइड करते हैं, ठीक है. और अगर कोई वेरिएबल आ जाता है डिनोमिनेटर में डिवाइडिंग वाले पॉइंट में, तो आप उसको कैंसिल कर दोगे, ठीक है. Now, next children, what we have is the last part of this. This is a double term. Double term या फिर हम बोल सकते हैं polynomial वाला division, ठीक है? So let's say I have a question here, children, which I've selected. This is 8x square plus 18xy minus 45y square, ठीक है? और इसको हम डिवाइड करने वाले हैं 2x minus 3y से. 2x minus 3y. Now some of you might have done this kind of question and some of you might have not done this question. Yeah, I know, Harvester of Souls, you have a class at 3 p.m. Yep, and we are just going to finish it in 2 minutes, then you can leave. Okay, so first of all, we need to check, children. अब जैसे मल्टीप्लाई में हमने देखा था पहले टर्म से हमने बाकी सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई करा था, राइट? सो सेम वे हियर ऑल्सो हम पहले टर्म से सभी टर्म्स को डिवाइड करेंगे एंड देन विल डिवाइड बाय द नेक्स्ट टर्म विच इज -3y. सो चिल्ड्रन टेल मी 2x के टेबल में 8x स्क्वायर कितने जाएगा? अगर मैं 2x को 4x से मल्टीप्लाई करूं, 2x 4x जा, it will give me 8x square. Very obvious. Then we put a negative sign just as in usual division. Remainder will be 0. ठीक है. नाउ एज आई टोल्ड यू कि जो 2x से हम डिवाइड करेंगे वैसे ही हमें 3y से भी डिवाइड करना है. सो सिंस वी डिड 2x इंटू 4x, हमें -3y को भी 4x से ही मल्टीप्लाई करना है, नॉट विद एनी अदर नंबर ऑफ आवर चॉइस. व्हाट वी हैव ऑलरेडी रिटन उसी से करना है. सो 3y इंटू 4x, चिल्ड्रन, -3 इंटू 4 है तो -12xy, ठीक है. Then of course you will be changing the signs. This will become plus, ठीक है, and 18 and 12 will become 30xy, ठीक है. फिर हम दोबारा रीस्टार्ट करेंगे. देखो 2x के टेबल में 30xy कब आएगा? जब 2x को हम 15y से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल गिव अस 30xy, राइट? 2 into 15 is 30, x into y is xy, है ना? The negative sign, this will get cancelled, children, ठीक है. अभी 3y से भी डिवाइड करना है, सो -3y इंटू 15y. आई टोल्ड यू सेम क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करोगे आप. -3y इंटू +15y. ऊपर से हम तब तक क्या कॉपी कर लेते हैं? -45y स्क्वायर कॉपी कर लेते हैं. 3y इंटू 15 इज -45y स्क्वायर. देन ऑब्वियसली विल चेंज साइन एंड हियर विल बी नो रिमाइंडर, ठीक है. सो आई होप आपको ये समझ में आया कि हमने इसको डिवाइड करके क्या है हमारा फाइनल आंसर. आवर आंसर और क्वेश्चन इज व्हाट? 4x plus 15y, ठीक है. So that's up with today's video, and I hope you have understood all the basic terms or concepts that we have tried to understand here with regards to algebra: plus, minus, multiply, divide, like terms, unlike terms, meaning of coefficient, variable. इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हो.